બંધ રૂમની એક સાધના, પીળા રંગની કોઈ દવા, એક જીવતી માછલી. લોકો હજારોની ભીડમાં આવે છે, મોટું મોઢું ખોલે છે, પછી તે જીવતી માછલીને માણસના શરીરમાં ધકેલી દેવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે એકવાર તે માછલી શરીરની અંદર ગઈ તો પછી જિંદગીમાં એક પણ વાર ના શ્વાસની બીમારી થશે, ના અસ્થમાની ફરિયાદ. શું છે આ? કોઈ અદૃશ્ય શક્તિ? આયુર્વેદનો ચમત્કાર, મેડિકલ સાયન્સનો કોઈ સિદ્ધાંત કે પછી કોઈ અંધવિશ્વાસ? કોઈને કંઈ ખબર નથી. બસ ખબર છે કે એકવાર તે દવા ખાધી તો આખી જિંદગી તમે નિરાંતનો શ્વાસ મળશે. 117 વર્ષ જૂની પરંપરાને, સદીઓ જૂના ચમત્કારને આજે આ ભીડ સામે પડકારશે અમારી ટીમ. દાવો સાચો પડ્યો તો અમે પણ શીશ નમાવીશું. જો ખોટો પડ્યો તો તે હકીકતને દુનિયા સમક્ષ લાવીશું. હૈદરાબાદના માછલીવાળા બાબા અને તેમની સારવાર આખી દુનિયામાં જાણીતી છે. અહીં લાખો લોકો સાજા થયા હોવાનો દાવો છે. કહેવાય છે કે બાબાની સારવાર એક ચમત્કાર છે, પરંતુ સવાલ એ છે કે ચમત્કાર છે કોનો? બાબા જે માછલી પર દવા લગાડે છે તેનો, કે પછી એ માછલીનો જેને માણસ જીવતી જીવતી ગળી જાય છે, કે પછી બાબાની સાધનાનો? લોકો તો કહે છે કે બાબાના હાથમાં જ કોઈ અદ્ભુત શક્તિ છે. આ બધા સવાલોના જવાબ શોધવા માટે અમે પહોંચી ગયા છીએ હૈદરાબાદ માછલીવાળા બાબાનું સત્ય જાણવા. शहरों में लगातार बढ़ती आबादी और उसके साथ ही बढ़ता हुआ प्रदूषण, और यही जड़ है अस्थमा की एक ऐसी बीमारी का जिसका कोई भी परमानेंट सलूशन किसी के पास भी नहीं है. लेकिन यहाँ हैदराबाद में एक शख्स ये दावा करता है कि आप मछली के साथ छोटी सी दवाई को निगल जाइए और उसके बाद हमेशा के लिए अस्थमा से आपको छुटकारा मिल जाएगा. इस दावे में कितनी हकीकत है और जो लाखों लोग हर साल यहाँ पर ये दवाई लेने आते हैं उनको क्या वाकई फायदा हुआ है, यही जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद में. આ સારવાર એટલી જ અસરકાર છે તો આખું વર્ષ કેમ નથી કરવામાં આવતી? આ દવા આપવા માટે માત્ર માછલીનો જ ઉપયોગ કેમ કરવામાં આવે છે? માછલીના મોં પર લગાવવામાં આવતી પીળી ઘૂંટી કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે? જો આ દવા છે તો બાબા તેને માછલી પ્રસાદમ શા માટે કહે છે? तो हरिनाथ जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हर आदमी मेरे ख्याल से जानना चाहता है वो ये है कि ये जो चला आ रहा है इतने वक्त से, ये चमत्कार है, आयुर्वेद विज्ञान है, कोई मेडिसिन है, क्या है ये आयुर्वेदिक विज्ञान है. ये 1845 में हमारे परदादा को ये दिया गया. उस टाइम वो जो हिमालय से ऋषि मुनि आए थे जी, उन्होंने आपके परदादा को ये फॉर्मूला बताया कि कैसे फॉर्मूला बनाना. उनके पास ऐसा अपने तपोस से जो भी उनके पास प्राप्ति है, ऐसा प्राप्ति ऐसे बचनी परिवार वालों को देंगे. वो कुछ भी नहीं चाह रहे, जो गरीब लोगों को दे रहे. दान पुण्य ये वर्ड्स है, तो दान जो करते थे किसी से कुछ मांगते नहीं, रिटर्न्स नहीं मांगते. આ કહાની મુજબ 1845માં એક સંત હિમાલયમાંથી તપશ્ચર્યા કરીને હૈદરાબાદ આવ્યા, જ્યાં તેમની મુલાકાત હરિનાથ ગોડના પરદાદા સાથે થઈ ગઈ. ગોડ પરિવારની ઈમાનદારી અને લગનને જોઈને આ સંતે પરિવારને એક ચમત્કારી દવા અંગે માહિતી આપી. માનવામાં આવે છે કે આ ફોર્મ્યુલાના આધારે ગોડ પરિવાર આજે પણ મફતમાં લોકોની સારવાર કરે છે. उस वक्त भी अस्थमा की प्रॉब्लम होती थी. प्रॉब्लम तो उस टाइम पे ऐसे फार्मूला को उन्हें देने से ये लोग निस्वार्थ करते हैं, किसी से पैसा वगैरह ये नहीं करते. वो बताया था
मुनि ने ये भी सोचा कि भाई इसको ये पैसा वगैरह लेंगे तो इसका असर निकल जाता बोल के बताते। अच्छा। तो जब से ये बताया गया। चलिए, तो ये बातचीत हम जारी रखेंगे क्योंकि आपके लाखों लोग वहाँ मैं ग्राउंड पे होकर आया हूँ, वहाँ पर वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। एक ही दिन होता है और एक ही दिन ये सारा कुछ होता है, 24 घंटे का वक्त है। क्यों इन्हीं 24 घंटों में होता है, क्यों एक स्पेसिफिक मछली ही इस्तेमाल की जाती है, क्यों इस दवाई का फॉर्मूला किसी को नहीं पता है और किस तरह से ये फॉर्मूला बनता है, किस तरह से बनाते हैं, ये सारी बातें करेंगे। મેદાનમાં પહોંચ્યા તો ત્યાં લોકોની ભારે ભીડ હતી। વર્ષમાં માત્ર એક જ દિવસ સારવાર કરવામાં આવે છે, જેથી લોકો મોટી સંખ્યામાં આવ્યા હતા। अच्छा, मुझे ये बताइए बाबा कि ये आज का ही दिन क्यों चुना जाता है, साल में एक दिन ही क्यों ये दवाई दी? ये जो रोहिणी कार्तिक होता है वो उससे उतना धूप रहता। गुरु ने बताया हमें मृगशिरा कार्तिक के टाइम पे ये करना तो अच्छा है बोल के, इसके वजह से यही दिन करते हैं। अच्छा, हाँ, कि सिर्फ आज ही के दिन ये दवाई दी जानी है, उसके अलावा नहीं दी उसके अलावा नहीं। સારવાર સાંજના શરૂ થવાની હતી, જો કે લોકો સવારથી આવવા લાગ્યા હતા। જીવતી માછલીને ગળીને લોકો તેમની બીમારી સાજી કરાવવા માટે લોકો તેમના વારાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા। મોટા ભાગના દર્દીઓ દમથી પીડિત હતા। દમ એ શ્વાસ સાથે જોડાયેલી એક બીમારી છે, જેમાં શ્વસન નળીઓ સાંકડી થઈ જાય છે અથવા તો તેમાં સોજો આવી જાય છે, જેથી દર્દીનો શ્વાસ ફૂલાય છે અને તેનો દમ ઘૂંટાય છે। જો કે આ બીમારી તો ફેફસા સાથે સંકળાયેલી છે અને બીમારી સાથે માછલીને શું લેવા દેવા છે? फिश का क्या कॉन्सेप्ट है सर? ये दुनिया के अंदर इकलौती दवाई है जिसको शायद इस तरह से मछली के मुंह में रख के और गले के अंदर उतार दिया जाता है। हाँ। मछली का क्या कॉन्सेप्ट है पूरा इसका? मछली का ये है, मछली के मुंह के अंदर जो बनाया गया हम लोग का ये है, वो सब उसके मुंह में लगाकर जो निगलाते हैं तो उसका ईसोफेगस जो बलगम वो ये होता है, वो डालने से ये ईसोफेगस फेरिंग्स में जमा हुआ है जो बलगम जो ये इसे होता है, जाला वगैरह रहता, उस जाले को ये सब काट देता है, काट देगा, साफ कर दे के फिर अपने पेट में जाने के बाद एंजाइम्स रासायनिक से जो ये हो गए गुलकर एक प्रकृति सिद्ध ऑयल सा बनकर वो अपने ब्लड स्ट्रीम में चला जाता। वो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो एकदम खुल जाता, जैसा कंस्ट्रिक्ट होते ही ऐसा सुकड़ जाते ही उसका फिर वापस चालू हो जाता। तो इसके वजह से वो नहीं सुकड़ने के लिए ये मछली का प्रसाद खिलाते। આ બાજુ બાબાના ઘરમાં અંતિમ સાધના શરૂ થઈ ચૂકી હતી। પૂજામાં માત્ર પતિની ગોળ પરિવારના સભ્યો જઈ શકે છે। ત્યાં શું થાય છે તે કોઈને ખબર નથી। માત્ર આરતીના સમયે દરવાજા ખોલી નાખવામાં આવે છે। पूरा जो दवा तैयार की गई है वो रखी गई है वहां पर लाके और इस दवाई के ऊपर पूरा उसको घुमाया गया है एक तरह से, ताकि जो इन्वोकेशन है, जो पूजा की गई है, जो पावर है, जिस तरह से कहा जाता है कि दवाई जिस तरह का काम करती है वो किया जा सके। तो ये यहाँ पर, और ये मछलियाँ भी लेकर आए हैं, ये फिशेज, यही वाली फिशेज इस्तेमाल की जाती हैं, यही वाले फिशेज इस्तेमाल की जाती हैं। ये देखिए, ये मछलियाँ भी लाई गई हैं, इनको भी मंदिर में ले जाया जाएगा। પૂજા બાદ પ્રસાદ લેવાનો સમય થઈ ગયો હતો। માછલીવાળી દવાનો પ્રથમ પ્રસાદ ખુદ બાબા લે છે। આ પછી સમગ્ર પરિવારનો નંબર આવે છે। હવે અમારી ટીમે આ સારવારની જ પડતાલ કરવાની હતી, તેથી આ માટે દવા તો લેવી જ પડશે। प्रसाद के तौर पर ये जो है अभी फैमिली के लिए है, लेकिन मैं इसको लेके ये समझना चाह रहा हूँ कि मछली जब जाती है आपके अंदर तो कैसा महसूस होता है। इट्स वेरी डेंजरस थिंग दैट आई एम डूइंग, आई डोंट नो। ये चली जाएगी अंदर। इजी का चलेगा जी, पानी का निकल साले પહેલી વારમાં
માછલી ગળી જવામાં સફળતા મળી નહીં. બીજી વારમાં માંડ માંડ આ કામ થઈ શક્યું. वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस. मतलब आप एक जिंदा मछली अंदर जाती है, इट इज समथिंग जो आप फील करते हैं तो आपको महसूस नहीं होता, लेकिन बहुत मुश्किल काम है. अंदर गले के अंदर मछली गई है और मतलब उसको जो स्क्विश कर रही है, वो जो विगल कर रही है, वो मैं महसूस कर पा रहा था गले के अंदर से. कुछ गोइंग डाउन लाइक हियर, यहाँ से पूरा नीचे जाते हुए पूरा महसूस कर पा रहा था. डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. આ તરફ દર્દીઓના હાથમાં માછલી હતી તો બાબા અને તેમના પરિવારના હાથોમાં દવા. બસ હવે થોડી વારમાં વર્ષો જૂની સારવાર શરૂ થવાની હતી. શું દરેક વસ્તુ એટલી સરળ હતી જેવી અમારી ટીમને બતાવવામાં આવી હતી? શું જીવતી માછલી ગળી જવાથી દમનો રોગ જડ મૂળથી નીકળી જાય છે? કોઈ દર્દી સાજો થાય છે કે પછી માત્ર પ્રસિદ્ધિના લીધે લોકો આવે છે? જો આ સારવાર એટલી અસરકારક છે તો મેડિકલ સાયન્સ તેને નકારે છે શા માટે? આજે દરેક સવાલના જવાબ મળવાના હતા. મેડિકલ સાયન્સ માટે પણ દમના રોગને જડમૂળથી સમાપ્ત કરવો મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે. આવા સમયે એક બાબા જડીબુટી અને માછલીના સહારે દમને જડમૂળથી દૂર કરવાનો દાવો કેવી રીતે કરી શકે? દર્દીઓની ભીડ પબ્લિસિટીનું પરિણામ છે કે બાબાની દવાની અસર? તે જાણવા માટે અમે બાબાની સારવાર કરવાની રીતને ખૂબ જ ધ્યાનથી જોઈ. એક જીવતી માછલી ગળી જવી સરળ નહોતું, પણ લોકો દરેક દર્દ સહન કરવા માટે તૈયાર હતા. જ્યારે અમે મૂળ સુધી પહોંચવા તરફ આગળ વધ્યા તો આ કહાની ઉકેલવાની જગ્યાએ વધુ ગૂંચવાઈ. ચોવીસ કલાકમાં અસંખ્ય લોકોને માછલી સાથે દવા ખવડાવવાની હતી. બાબા, તેમનો પરિવાર અને તેના સહયોગીઓ આ કામમાં ઝડપથી લાગી ગયા. इस मछली में बहुत सारी खासियत है. एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर एक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जिसके चलते ये पानी के बाहर और कम ऑक्सीजन में भी काफ़ी देर तक जिंदा रह सकती है. अब ये देखिए, मछली काफ़ी देर से मेरे हाथ में है और अभी भी ये जिंदा है, इसके अंदर जान बाकी है. और जैसे ही मैं इसे वापस पानी में डाल दूंगा, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है इसको मारने का, मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये बड़े आराम से तैरने लगेगी. तो ये इस मछली की एक बड़ी ख़ास बात है. मरल मछली कहा जाता है इसको. अब इस मछली का उस दवाई के साथ क्या ताल्लुक है और ये मछली और दवाई मिलके क्या असर करती हैं, ये तो पता नहीं. लेकिन ज़रा भीड़ का आलम देखिए, लोगों का आलम देखिए. लोग पहुंचना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी इस मछली को लेके. यहाँ से मछलियाँ मिल रही हैं, मछली लेके जल्दी से जल्दी पहुंचना चाह रहे हैं. अब इस मछली की हालत थोड़ी कमज़ोर हो गई है, काफ़ी देर से मेरे हाथ पर है. मैं इसे पानी में डालता हूँ, इसकी जान बचाना ज़रूरी है. આ ખાસિયતના લીધે બાબાએ આ માછલીની પસંદગી કરી છે. દર્દીના પેટમાં પહોંચ્યા બાદ મોઢા પર રહેલી દવા છોડી દે છે. આ ઉપરાંત મોડે સુધી જીવતી રહે છે. જો કે દાવા મુજબ માછલી જેટલી જીવતી રહેશે તેટલો ફાયદો દર્દીને થશે, પરંતુ દવા અંગે તપાસ કરવી મુશ્કેલ હતું. हाईकोर्ट वाले लेके जाके सैंपल लेके जाके टेस्ट कराए. ये सरड नहीं है, कुछ भी नहीं है. जड़बूटी का दवा है बोल के. हाँ, उसमें ये बोलने का चीज़ें है, ये नहीं है. हमारे बड़े लोग हम लोगों को अभी तक नहीं बोले. अब उन दवा बनाने के बाद हम लोगों को बुला के कराने लगाते. अच्छा, तो अभी आप जानते हैं कि दवाई कैसे बनाई जाती है? नहीं जानता. आप अभी भी नहीं जानते. एक ही बार जो दवाई ली जाती है वो तो दवा कहाँ, वो तो चमत्कार हो गई. चमत्कार क्या, जो आयुर्वेदिक से बनता है उसमें आयुर्वेदिक में इतना शक्ति है. जब राम के टाइम पे जो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, संजीवनी लेके आके उनको ये करने की वजह से ये हुआ. वही संजीवनी कैसा ये काम करता.
अब ये टाइम पे भी वो आयुर्वेदिक की वजह से ये होने की वजह से ये हो। બાબા પોતાની રેસિપી કોઈને નથી બતાવતા. બાબાની દવાથી દમનો રોગ મટે છે તો તેની જાણકારી બધાને હોવી જોઈએ. સવાલ ઊભા કરવાને લઈ બાબા સામે સરકાર પણ હતી. પછી કોર્ટે બાબાની જડીબુટ્ટી ટેસ્ટ કરવાનો આદેશ આપ્યો. સેમ્પલ હૈદરાબાદ અને કોલકાતા લેબ મોકલવામાં આવ્યા, જ્યાંથી ચોંકાવનારો રિપોર્ટ આવ્યો. अकॉर्डिंगली दिस इसके बाद कमीशन ने अपना काम किया और इस पेस्ट को जांच के लिए भेजा और जांच में पता चला कि इस फिश मेडिसिन में दमा को ठीक करने का कोई तत्व नहीं है. फिश मेडिसिन After that, then these people, Bathin Harnath, उसके बाद बथनी हरिनाथ गौड़ परिवार ने हलफनामा दिया और कहा कि ये धार्मिक अनुष्ठान है और ये प्रसाद है जिसे हम धार्मिक अनुष्ठान के बाद बांट रहे हैं, और हमने ये नहीं कहा कि ये अस्थमा को ठीक कर देगा. religious practice. So we have not advertised or we have not said this will cure asthma. જાણકારો મુજબ દવાને પ્રસાદ માનવો એક કાનૂની દાવપેચ હતો. આ વાત થઈ કાનૂની વિવાદની. મુદ્દો મેડિકલ સાયન્સને લઈને પણ હતો. બાબાએ અમારી ટીમને કહ્યું હતું કે આ દવાનો રાજ આયુર્વેદ વિજ્ઞાનમાં છુપાયેલો છે. जितने के एलोपैथी डॉक्टर खुद आके यहाँ पर ये प्रसाद लेके जाते हैं. अच्छा, क्यों बोल के वो तो ये प्रकृति सिद्ध ये आयुर्वेदिक है. आयुर्वेदिक में क्या है वो स्लो कम होता अच्छा, पर कंप्लीट क्यूर हो जाता. अच्छा, मतलब फिर धीमे बात होता है नहीं लेकिन होता. इलाज हो जाता है. इलाज हो जाता. मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, जादू नहीं ये दवाई है, हाँ जी, मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है. मेडिसिन. પણ આયુર્વેદના જાણકારો કહે છે કે આવી કોઈ દવાનો ઉલ્લેખ પૌરાણિક ગ્રંથમાં નથી મળતો. जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद के अंदर जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो हम एक हमारी क्लासिकल बुक्स हैं, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, वाग्भट ने जो अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, तो इन पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं मिलता है. लेकिन ये इसका हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई फेक चीज़ है या गलत चीज़ है, क्योंकि चरक में ही हमारी जो चरक संहिता है उसमें चरक ऋषि ने एक लिखा, एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि ये जो नॉलेज हम यहाँ पर संकलन कर रहे हैं इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ग्वाले लोग होते थे जो अपनी गाय चरा रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं, भेड़ बकरियां, जिस तरह के लोग पुराने ज़माने में होते थे तो वो टहलते रहते थे, घूमते रहते थे, उनको बहुत सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान होता था. तो वो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हुई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो कारगर नहीं है. तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक फोक मेडिसिन का एक पार्ट है. મેડિકલ સાયન્સ તો બાબાના દાવાને તદ્દન ફગાવે છે. ડોક્ટરોના કહેવા મુજબ જીવતી માછલી ખવડાવી દમના રોગને જડ મૂળમાંથી ન મટાડી શકાય. मछली का इसमें कोई रोल नहीं है. मछली इज ए कैरियर. जैसे मिठाई का डब्बा होता है, अंदर मिठाई होती है, वो जो गोली है ना वो जो उसमें रखते हैं और उसके साथ पेस्ट भी होता है. एक्चुअली इसको वो मेडिसिन नहीं कहते, प्रसादम कहते हैं. तो ये प्रसादम जो है ना ये दो चीज़ों का मिक्सचर है. उन्होंने जैनियों के लिए भी और जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए भी वो अलग से उन्होंने प्रसादम बनाया हुआ है, विच इज दिस, दे डोंट गिव फिश इन दैट. सो फिश रूल आउट हो गई. ओवरऑल जो है एस्थमा में रोल जो है वो स्ट्रेस का है. तो दे आर डूइंग डी स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, विच इज ए बिग जॉब फॉर मी एज ए डॉक्टर. मैं तमाम लोगों से कहता हूं, इवन डॉक्टर कम्युनिटी से कहता हूं कि जब तक आप अपने मरीज की स्ट्रेस नहीं दूर करेंगे आप उसको क्योर नहीं प्रोवाइड करेंगे. और एस्थमा में सबसे ज्यादा जो रोल है वो स्ट्रेस का है. अगर आपने पेशेंट को डिस्ट्रेस कर दिया एस्थमा ठीक हो गया. અદાલતમાં દાવાને પ્રસાદ કેમ કહ્યો, આયુર્વેદમાં કેમ ઉલ્લેખ નથી, મેડિકલ સાયન્સ કેમ તેને ફગાવે છે, માટે અમે ફરી બાબા પાસે પહોંચ્યા. डॉक्टर एक हैं वो कहते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसी दवाई है ही नहीं जो दमे को फायदा पहुंचाए. टेस्ट भी करवाया है, टेस्ट भी करा, पूरे लोगों को ये कराया था. जन विज्ञान वाले ये पूरे डिपार्टमेंट में पूरे भारत में जितने लैब है वो लैबों में करा, टेस्ट वगैरह कराया. उसमें अच्छा ही ये हुआ. ऐसा मर्क्यूरी, स्टेरॉइड, हम लोग कुछ पैसा कमाएंगे तो फिर ये करेंगे ना हम लोग. ऐसा हाँ क्यों ये करेंगे. કોઈ ખોટું કેમ બોલે,
ફાયદો લેવા માટે? પણ બાબા અને તેમનો પરિવાર આ માછલીવાળી સારવારના બદલામાં કોઈ ચાર્જ નથી લેતો. આ પરિવાર 150 વર્ષથી લોકોની સારવાર કરી રહ્યો છે. ભીડ દર વર્ષે વધી રહી છે. આ પીળા રંગની પેસ્ટ દવા છે કે પ્રસાદ તે મુદ્દો નથી. મુદ્દો છે બીમારી મટવી. લોકોના દાવા મુજબ તેમને માછલી સાથે આ પેસ્ટ ખાવાથી ફાયદો થાય છે. લોકોને બાબાની જડીબૂટી પર ભરોસો છે. આ ભરોસાને જ હકીકત માનવામાં આવે છે. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.